Hello everyone, this is Sajid Latif Khan and you are watching my channel Learning for All, and today I am going to talk about a very important topic, that is how to hire an effective teacher. Hiring teacher is a tough and challenging job. Hiring an effective teacher is a very crucial task because your teachers determines the future and success of your schools. Moreover, teachers are responsible for students' learning, they are responsible for students' progress and for teaching them valuable skills. Teachers have a huge impact on your school's overall reputation. A bad hire or choice can cost you more than that you have ever imagined. Teachers are the backbones of your schools, and that is why their selection should be done with some care and wisdom. It doesn't matter how huge your school building is, which curriculum you are teaching, how sophisticated equipments and resources you are using. If I lift up the entire building of your school and put it aside, there we are left with only two characters: an actor and the audience, a teacher and the students. If the teacher is teaching effectively and if the teaching and learning is effective, the building with all the facilities will matter less. टीचर्स की परफॉर्मेंस की फीडबैक को जानने के लिए हमारे पास तीन मुख्तलिफ ज़राए मौजूद होते हैं. या तो स्टूडेंट बता सकते हैं अपने टीचर के बारे में, पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए टीचर की फीडबैक दे सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल बज़ाते ख़ुद टीचर्स के बारे में अपनी फीडबैक दे सकता है. Every principal has a dream to provide quality education to children, and it is impossible without considering the very important stakeholder of his school, who are teachers. किसी भी प्रिंसिपल के जहन में सबसे पहले जो सवाल गर्दिश करता है वो ये है कि हाउ कैन आई फाइंड अ गुड टीचर. इसके बाद प्रिंसिपल के जहन में दूसरा सवाल ये है कि टीचर्स के इन एंड आउट के लिए क्या सलूशन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रिंसिपल के लिए सबसे मुश्किल काम टीचर्स की रिप्लेसमेंट ढूंढना होता है, और अगर बहुत से टीचर एक साथ छोड़कर चले जाएं तो ये स्कूल के लिए ख़तरे की घंटी है. तीसरा सवाल ये है कि एक्सपीरियंस टीचर के जाने के बाद इस खुला को कैसे पुर किया जाए, क्योंकि जो टीचर स्कूल में 2 या 3 सालों से पढ़ा रहा था और उसके जाने के बाद इस तरह के रिप्लेसमेंट का होना एक मुश्किल काम है, क्योंकि न्यू टीचर्स को सेटल डाउन होने में वक्त दरकार होता है. ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि अगर प्रिंसिपल को अपने विज़न और एजेंडा के मुताबिक अगर उस तरह के हाईली स्किल्ड टीचर्स ना मिलें, ऐसी सूरत में प्रिंसिपल की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा. Here are some suggestions that can help you in finding the great teachers. The very first point is advertising a teaching job. In our country, teaching jobs are common for any individual. By advertising, you can attract so many teachers, and teachers can also know about the vacant post and they can have access to your schools. And the second point is young graduates. You can also invite young graduates to teach in your schools. Young graduates have great zeal and zest for their profession. Although they are inexperienced, yet they can be trained and provided professional trainings. Young graduates can be hired as assistant teachers to fill the gap. When these assistant teachers get some experience, they can be useful asset for your school. The third point is you can also use references. स्कूल में पहले से ही मौजूद एक्सपीरियंस टीचर से कहा जा सकता है कि वो आपको अच्छे, क्वालिफाइड, स्किलफुल, डिलीजेंट टीचर्स रिकमेंड कर दें. यही एक्सपीरियंस टीचर्स असिस्टेंट टीचर या न्यू टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं और इनकी ग्रूमिंग भी वक्त के साथ साथ कर सकते हैं. And the next point is interviews of teachers. Hiring a productive and effective teacher for your schools
a lot more depends upon interviews of the teachers, and there can be a turning point in finding a great teachers. There are certain questions that every principal should keep in mind while interviewing the teacher. First, how is the teacher's communication skills? Is a teacher open to feedback? क्या टीचर अपने ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म को फेस कर सकती है? क्या वो प्रिंसिपल, पेरेंट्स, एक्सपीरियंस टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से दी जाने वाली फीडबैक को एक्सेप्ट कर सकती है और उसकी फीडबैक की रोशनी में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की सलाहियत रखती है? क्या टीचर रिसोर्सफुल है? डू यू थिंक द टीचर इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव? टीचर का खुद क्रिएटिव होना ज़रूरी है। एक क्रिएटिव टीचर ही स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी ला सकता है। एंड दैट चैम्पियन टीचर कैन मेक हिज और हर स्टूडेंट्स thinkers, innovative and mindful. A good teacher is always comes up with great new ideas, projects and interactive activities. Now let's talk about the teacher's organizational skills. It is not the only responsibility of the teacher to look after the issues inside the classroom. Good and effective teachers need to be well organized inside and outside the classrooms, especially inside the classrooms, only to and keep the resource material updated and current. A good principal should also consider this point, whether the teacher is having a craze and love for learning. एक अच्छे टीचर्स की सिलेक्शन के वक्त इस पहलू का भी जायज़ा लेना ज़रूरी होता है कि क्या टीचर में स्पिरिट ऑफ लर्निंग है या नहीं। क्या टीचर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती है? बिकॉज अ गुड टीचर ऑलवेज हैज़ थर्स्ट फॉर लर्निंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई ही शी वांट्स टू बी अ टीचर. What motivates her to be a teacher? How will she respond if her colleagues don't support her? What would also she do to find collaborative relationship? What is the purpose of classroom management and class discipline? If you are hired, in what area do you think you would require the most support? What are your favorite lessons to teach? What is the most inspiring thing you have ever done as a teacher? What kind of activities would you like to participate inside and outside the classroom? Is it important to understand a child or students? Do you think that lesson planning is important for students' learning? What are the learning domains? What is the difference between content-based teaching and SLO-based teaching? How will you teach students with mixed abilities? How can you help slow and students with low readiness? How will you engage hyperactive students? Do you have any IT skill? How would you deal with fussy and difficult parents? What are your hobbies or interests? Have you ever attended any training workshop, seminars regarding teaching and learning or education? Are you interpersonal or intrapersonal? How do you deal with stressful environment inside or outside the classroom? That were some questions that you can ask from teachers while having their interview. And what to do after selection? Your job doesn't end here. टीचर्स की सिलेक्शन के बाद एटलीस्ट फॉर 2 months आपको टीचर्स को ऑब्जर्व करना होता है. इस पीरियड के दौरान टीचर्स को आपके सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है. टीचर्स को गाइडलाइंस और हेल्प चाहिए होती हैं. हर स्कूल का एक अपना अलग सेटअप और वर्किंग एनवायरनमेंट होता है. न्यू टीचर्स चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, इसके लिए ये स्कूल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा जिसमें सेटल होने में टीचर्स को कुछ वक्त दरकार होगा. प्रिंसिपल और सेक्शन हेड्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टीचर्स को अपने स्कूल्स की पॉलिसीज़, SOPs, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में आगाह करें. न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स को ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करवाएं. With collaborative, healthy and productive school environment, you can hire and pick inspiring teacher for your schools. Dear principals,
ये बात आपको ज़हनशीन करना चाहिए कि आपके स्कूल की असल पहचान या तो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या आपके टीचर्स। किसी भी स्कूल की कामयाबी का इन्हिसार उसके वेल इक्विप्ड, डिलीजेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट टीचर्स पे होता है। आपको चाहिए कि अपने टीचर्स को वक्त के साथ साथ प्रिपेयर करें, उनकी मुख्तलिफ़ मराइल में उनकी आप ट्रेनिंग करवाएं। एक अच्छा ट्रेन टीचर ही क्लास में जाकर इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकता है। That is it for now. I hope you like my video. If you like my video, please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.